Namaskar, good evening. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And today is our regular Wednesday meet. And I welcome all of you here and the guests who are coming here for the first time. Special mention for the guests who are taking their precious time out to attend this session and learn something on their spiritual journey. Yes. And the topic for today. So today we have a topic which is very anybody can relate to the topic. And the topic is ignorance bliss. We have often heard this, ignorance is bliss, right? So we're going to look into that topic of is ignorance bliss, and that is the topic for today. So Jesse, as soon as you hear this topic, what comes to your mind? Definitely a proverb which I said, so ignorance is bliss, that comes to the mind. Anything else that comes to your mind when you hear this topic? Anybody can share that, whatever comes to your mind. So let me first expand this topic. So the question is ignorance bliss? Okay. But then if it is a debate, then it has to be a pro and, for and against. So agar for ka topic hai is ignorance bliss, then the against topic would be, what is the opposite of ignorance? Opposite of ignorance? Wisdom. Knowledge, wisdom. Correct. We'll pick it up, wisdom. So the question actually is ignorance bliss or is wisdom bliss? Okay. So there are three important terms which are mentioned here. So first we will look into the details of these. What is ignorance? What is wisdom? And what is bliss? And then we can see what is the appropriate conclusion for this topic. Yes. So with this understanding, let me throw the discussion open. Anybody who would like to share? Vijayji, you raised your hand. Please go ahead. शशिधर जी, एक चीज और याद आती है about this, apart from ignorance is bliss, is that ignorance about law does not absolve you from your responsibility as per law. Correct. So what do you say that? Would you say? So which in a sense means that ignorance is certainly not the answer. There has to be wisdom. So what is ignorance in that case? What is ignorance leading to? That will be another question that we will look into. Okay. So if ignorance is not leading you to bliss, then we should know what ignorance is leading you to. That will be an appropriate way to handle the topic. Correct. But first, let us look at what is ignorance. Ignorance as such, quote unquote, ignorance, what does it mean? Okay. So ignorance is basically, we can say, lack of information, lack of knowledge, or lack of wisdom. And this can be applicable to different people in different situations in life, right? So like you just mentioned, Vijayji, ignorance of a law, that means some information is not available to someone and he is ignorant of the rules and regulations of the discipline of the law of the land. He is not aware of it. Okay. So if he is ignorant of that law, too bad for him. Too bad for him, because if he commits an offense, he will face the consequences. So this is in the normal world. So we will look at these discussions. We'll look at these discussions in two ways. One is in the normal physical materialistic world that we are living. And one, of course, is the spiritual journey that we will be looking at. So we will consider both the situation. First, we will look at in the materialistic world. So as Vijayji said, if somebody is ignorant of a law, that means lack of knowledge, lack of information, or lack of facts. Facts मालूम नहीं है. जैसे अभी एक हफ्ता पहले हमको नहीं मालूम था 3 states के चीफ मिनिस्टर कौन होने वाले हैं. So we were not aware of it. Now it has been announced, so we are aware of it. So earlier we were all in a confusion state. So ignorance of something will lead to a state of confusion. And when you are aware of the facts, when you are aware of the information, when you are aware of the knowledge, and when you get that wisdom, then the ignorance is removed and some clarity comes to you. So you can take the actions or you can take decisions in a perfect sense. Is that okay for everybody? Yes. So ignorance in the normal life, we can say, is something which has to be done away with. That is why we go to school, right? If ignorance was the only thing that we wanted in life, we won't have any education system.
हमको एजुकेशन की जरूरत नहीं थी फिर. Correct? So some education is required, which means we have to remove the ignorance part of it with some relevant facts and informations, with relevant knowledge and relevant wisdom. Is that okay? Yes. So I'm saying all the three because at different levels we will have different. We have different situations. We will have different. Like in school, we are getting information. We are getting some knowledge. We are being taught. We are being taught ABCD. We are being taught 1 to 0 to 9 digits. And of course, then it goes into trigonometry and algebra and whatever detailed maths. But the basics are important. So everything in English is around A to Z. Everything in maths is surrounded or revolving around 0 to 9. So we need to know the basics. If you're not aware of the basics, then we are ignorant. Making sense? So ignorance is clear to everybody. This is in the materialistic world. Obviously, we need to be informed. What are the rules and regulations? What are the laws of the land where we are living? So in India, it could be a different law. In some other country, it could be a different law. So we should be aware of it. Even in driving, the driving rules here in India are different from that in US, right? So if you're traveling there, you have to accustom, you have to be knowledgeable, you have to be aware of it, and then you have to practice it accordingly. Important, correct? That is about ignorance. Now, if you look into the spiritual world, ignorance of spiritual laws, what will it give you? Okay. This is a request for language. Okay, so I will say that in Hindi. So अभी तक हमने ये बोला है कि अगर आपको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है. आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे. तो नॉलेज सही होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें. अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होगा? अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज आपको नहीं है, आप इग्नोरेंट हैं, if you are sleepwalking in life and you say there is no God, there is no spiritual laws, spirituality सब बकवास है, ये सब escapist, I'm just saying something just out of my weird thinking. So spirituality is all a way of running away from life. Escapist viewpoint है, there is no God. I am the only person who is responsible for my success. So I will live my life accordingly, and you live your life accordingly without any spiritual gyan or spiritual wisdom. What will it result into? What is a normal way of living life if you don't believe in law of karma, if you don't believe in law of cause and effect? We tend to blame everybody else for whatever is happening in our life. So we tend to become more negative. Correct? Possible? I'm not saying this is a mandate or this is how it is going to be, but it could be a possibility, correct? So if somebody is blaming others, somebody is criticizing others, somebody thinks that others are responsible for his life, then that person is ignorant of the spiritual laws. First of all, he doesn't even know. And when he knows that, then he has to practice it. And when he practices that in his life and he got some benefit, then he gets the wisdom. Correct? So opposite of ignorance is what? Knowledge, information, rather the other way around. Information, then knowledge, and then wisdom. So let me ask a basic question. What is the difference between information, knowledge, and wisdom? मैं तीन चीजें बोल रहा हूँ बार बार. Everybody clear on what is information, what is knowledge, and what is wisdom? बताइए, कौन बताना चाहेंगे? Anybody? कौन बताना चाहेंगे? सबसे information is any piece of data. Correct. Okay. And knowledge is when you put that data in a comprehensive format in order. Okay. Okay. Very good. And wisdom is the application, the practical application that you develop from that knowledge. And you're very right about whatever you said, but there is another one line that you have to add. Okay. About wisdom, right? So everybody clear, right? Information is a bit data that is coming to you. You process that information and you get some knowledge out of it.
So processing, it can be done in whichever way, which path said, and you get the knowledge. Now you apply that knowledge, but applying that knowledge doesn't give you wisdom. What will give you wisdom? Applying that knowledge, what happens? You get what? You get an experience of life. When you apply that knowledge in your different life situations, you get an experience of life. And that experience gives you wisdom. That is the connection. Yes, let's acknowledge part. Very good attempt, and nearly 90% right. Everybody clear on this? तो स्कूल में हमको क्या मिल रहा है? We say knowledge, but actually everybody gets that information. स्कूल में information मिल रही है, फिर हम उसको रटते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझ के उसको आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग सीधा रट लेते हैं, है ना? तो बिना समझे सोचे समझे रट लेते हैं, एग्जाम में वैसे के वैसे ही कॉपी कर दिया एंड मार्क्स मिल गए. So the whole education system is about marks. So you don't really need to understand what is being taught to you. You just have to mug it up. At least some of the students will have that mentality. So there is no understanding, there is no knowledge there. It's information. Information is passed, you lap it up, and then you reproduce it on the paper, and you get the marks, and then you say, wow, great, I have a degree with me. Many people do that. At least let's say 50% do that. 50% process it, get it as a knowledge, and that knowledge helps them, right, to get the degree. वो समझ के लिखते हैं, तो लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर लेते हैं बेशक. Even if they forget something, they can change the language and then write it down, and they still get the answer, and then they reasonably pass the tests. So understanding is important. That means knowledge mila, information or knowledge यहाँ पे मिला. After the knowledge, what happens? Now somebody is an engineer, somebody is a doctor. The whatever they did in the MBBS 5-year course, or what they did in the 4 years of engineering, doesn't actually give you the engineering wisdom. You apply it in a job, or you apply that in a hospital, then you get an experience, and that experience gives you the wisdom. With that wisdom, you can now treat any patient, whether you have faced that situation before or not, because you have become wise. So wisdoms come always from experience. Making sense? So ignorance and wisdom clear हुआ? Any questions between ignorance and wisdom? We are not saying what is good, what is bad. We are just saying what is ignorance and what is wisdom. Right? Let us also look at what is bliss. What is bliss? If I ask this question, what will be the answer? Bliss. Anand. Anand क्या है? Gunjanji, if you are saying something, then you are on mute. Amit ji. सच्चित आनंद. सच्चित आनंद, तो आप उस आनंद की बात करें. Okay. So what you're basically saying that it is a quality of the divine. परमात्मा या आत्मा का एक क्वालिटी है आनंद, है ना? Bliss. Okay, taken. Very good. And anybody else? What is Anand? What is bliss? When I pet my dog, it's blissful. Go ahead. When I'm playing with my dog, I'm petting her. It's blissful. Okay, so if the dog is not there, you're not blissful. No, not there. I mean, when I'm with her, when I'm spending time with her, okay. When she's sleeping beside me, it's blissful. Yeah. So if the dog is not sleeping beside you, it is not blissful, right? Not exactly, but yeah. Yeah. So you have to understand what is bliss. You have to understand what is bliss. There is a difference between pleasure. There is a difference between joy or happiness. ठीक है? And जैसे सुख दुख बोलते हैं ना, खुशी गम बोलते हैं ना, अगर उसका रिलेटिव ऑपोजिट है आपके पास, तो वो आनंद नहीं है. Anand is unconditional, permanent, eternal, everlasting. That is bliss. Okay. Right now, I'm just distinguishing what is bliss. I'm not saying nothing about how you will get there. I'm just simply saying what is bliss.
तो ये क्वालिटी जो आनंद की है, जो हम आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है. दैट इज कॉल्ड ब्लिस. If you are happy for a reason, it is not bliss. If you are joyful for a reason, that reason is removed, you will no longer be happy and joyful. So it is not bliss. Right? So Parth, good attempt, but try to understand it this way. It will give you more clarity. Okay? So when we talk of bliss, you have to understand bliss is in the realm of the absolute. Of course, we say that in the materialistic plane also. Marital bliss. I was in a blissful, my whole being was blissful when I saw the sunrise. Yes, you can have that moment when you lose something, when you lose yourself. आप ego के बाहर आ गए and then you are one with the whole scenic beauty. You can feel out of the world kind of a scene. That can be blissful, but that is momentary. Then in the next moment you come back to your senses of your body and your mind, and that bliss is gone. So understand it this way. If it is a fleeting moment, it is not blissful. It is not bliss. It is some pleasure, or it is something which you can experience and from the outside world, and when that situation changes, that condition also changes. So like we say, happiness, joy and sorrow, happy and sad, it's a relative, है ना, उसको opposite है. Bliss को opposite नहीं है. आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं, क्या बोलेंगे, कोई एंटोनिम नहीं है आनंद का. ब्लिस का कोई opposite नहीं है. So it is not in this realm actually. It is the realm of the absolute, of the God, of the soul. That is what we are calling bliss. Making sense? All right, good. Yes, Vijayji, go ahead. So, Shashi Dhar ji, will you still call it as an experience of life? Bliss, yes. We use that loosely in the relative term. But yes, you can experience bliss right now. No, You can't experience that in the past. You can't experience that in the future. You can experience that in the right now. So if somebody achieves the bliss, there's no going back after that. There is no going back after that. Absolutely right. It is a permanent state. It is your permanent state. You don't have to go anywhere. You don't need anybody else to experience bliss. You are blissful. You are bliss. It is your innate nature. Sat Chit Anand Hoa. Anand is your natural state of being. Bliss is your natural state of being. You can't learn to be blissful. Right. And you can't learn to be, just like you can't learn to be handsome. You can't learn to be beautiful. You can't learn to be wise. You can't learn to be bliss. You are blissful. वो nature आपको अपना, you have to get in touch with that basic nature, which is in the core of your being. इसलिए बोलते हैं ना, हमारा basic nature क्या है? All human beings have the basic nature at the soul level. We are Sat Chit Anand. Sat is the truth, existence, eternal truth. Chit, the liveliness, the awareness, the consciousness that we are. And Anand is bliss. So Sat Chit Anand is our nature. We don't have to look it outside. Outside it will be reflecting as kabhi khushi, kabhi gam, pleasure and pain, joy and sorrow, happiness and sadness. Relative world में बाहर तो यही मिलेगा आपको. But you have established in your inner core of who you are, that is blissful. Making clear? तो तीनों वर्ड की हमने एनालिसिस कर ली. Ignorance, wisdom and bliss. Is everybody clear on this, or do you need any further discussion? If you have any questions, please raise. Okay. So now let us look at the topic. Now we are ready to have a discussion on the topic. Is ignorance blissful? So let's have some discussion. कौन बोलना चाहेंगे? Who wants to share his views?
Is ignorance blissful? Let me welcome the people who have just joined in. So, ज्योति जी वेलकम, सौरव कुमार जी अगर आप पहली बार आए हैं वेलकम, हर्षवर्धन जी वेलकम, विवेक वालिया वेलकम, राजीव वेलकम, परमपाल सिंह जी वेलकम, तरुणा जी वेलकम. Yes, so I've covered everybody. And anybody who I missed out, you are welcome anyway, right? Okay, let's have the discussion on. So, is ignorance blissful? What is coming to your mind? कौन बोलना मेरे चाहेंगे? दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है. पहले Okay. पॉइंट बोलो, पहले डिक्लेयर करो स्टैंड क्या है तुम्हारा, उसके बाद स्टोरी सुनेंगे. Okay. So actually उसी के लिए एक एग्जांपल like a metaphor you can say. Okay. For this क्योंकि so जैसे जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हो इग्नोरेंस के बारे में या ब्लिस के बारे में, ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं इग्नोरेंस को एक डार्क वाइट से. ओके, so when you turn off the lights in the room, okay, you cannot see anything. Okay. तो अगर आपको नहीं पता कि भाई कोई डेंजर है आसपास में, ठीक है, और रूम की लाइट्स ऑफ है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, तब तक आप सेफ फील कर रहे हो. ठीक है, भले कोई आपको आके बाहर के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है. तब तक जब तक वो मोमेंट नहीं आएगा, जब तक when you are hurt, you are feeling very blissful. ठीक है, बट आपको पता है कि उस कमरे में आपके लिए कोई डेंजर है और अंधेरा हो रखा है, then you'll feel unsafe. ठीक है, so I think उस तरीके का एग्जांपल ले सकते हैं to understand. Okay, got it. So what you're saying is, if you're unaware of the danger, you can be at peace. I won't say blissful. You can be at peace rather than in anxiety. That's what you're trying to say, correct? If you're not aware of the danger, then possibly you will be at peace rather than in anxiety. If you're aware of the danger, then possibly you will be standing there in a lot of anxiety and worry. So you can avoid that if you are ignorant of that lurking danger, correct? Got it, Parth. Point taken. Yes, anybody else? I think everybody has understood what Parth is trying to say. So if you're not aware of the danger, possibly you will be saved from the level of anxiety that you might suffer if you are aware of it. Point taken. Okay. Yes, anybody else? Who has any view? Yes. Siddharji, I will make an attempt here. Whether ignorant or wise, as long as your actions and reactions are unconditional and do not create a reaction which is not natural, I would say that you can be in a state of bliss like a child, like a baby. You know? Okay, good. Very good point, Vijayji, you have raised up. So first let us understand the behavior of a child, because often we say ignorance is bliss in relation to the child only. You know? So let us understand what is a child doing. Imagine a 1-year-old child, okay, smiling, very joyful, giggling, smiling, moving his hands and feet and very blissful. अब चारों तरफ हो सकता है पानी भरा हो, चारों तरफ हो सकता है आग लगी हो, उसको पता नहीं है. So that is one way how you can relate to being ignorant is blissful. He is happy, joyful, laughing away. But tell me, what is blissful about the child? If ignorance as such is blissful, then ignorance at any level would be blissful, right? Ignorance of a child is also blissful. Ignorance of a teenager will also be blissful. If ignorance is really blissful, okay, then it will not be restricted only to the child. एक टीनेजर का इग्नोरेंस भी ब्लिसफुल होगा, एक एडल्ट का इग्नोरेंस भी ब्लिसफुल होगा, एक ओल्ड मैन का इग्नोरेंस भी ब्लिसफुल होगा. So do you see blissful quality in all the other categories? No, we relate only with the child. Yes or no? Yes. So actually it is not the ignorance of the child which makes it blissful or which makes the situation blissful. It is the innocence of the child. Child is actually innocent. उसकी innocent smile है, उसका innocent joy है, which is the quality of his innate nature. He is in touch with the basic nature. अभी तक कंडीशनिंग नहीं हुई है, वो अपने बेसिक नेचर में है, इसलिए वो ब्लिसफुल है.
It is not actually the ignorance, it is actually the innocence of the child. The joy and the smile of the child is blissful. I hope all of you can connect with it. Correct? क्योंकि अगर ignorance blissful होता तो as a 50-year-old, my ignorance should also be blissful. Correct? So if I jump on somebody, okay, and sit on his head and do what the child does very naturally, that won't be very blissful, right? Yeah, it won't be. But there are many, it would rather look very stupid. And people would actually take a lot of offense. Many of the situations we have seen in the flights, people are drunk and then they urinate here and there and then they're offloaded and they are thrown out of it. So it is not blissful at all. But if a child does that, it looks blissful because he is innocent. And ignorance cannot be blissful. Innocence can be blissful. So relate it in that way. Actually, what I wanted to say was that as long as your actions are not creating reactions and you are in a state of natural Every being, action will create a reaction. That is science. It can be ignored or it can be taken seriously. But every action will have a reaction, otherwise it is not an action. Tell me one action which will not have a reaction. वो तो साइंस है सर. इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे एनर्जी का लॉ है वैसे ही साइंस का लॉ है ना. एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. आई स्टिल रिमेंबर इट. या ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. एक्शन हुआ तो रिएक्शन तो होना ही है आउटसाइड वर्ल्ड में. So anyway, we will not dwell into that. What we are talking of is ignorance is not blissful. Innocence is blissful of a child. Correct? Now, what could be, so in one way we can say child who is not aware of the surroundings because of his innocence is blissful. He is in touch with his real nature of Sat Chit Anand, so he is blissful. Now, an enlightened Maharishi or a Brahma Rishi is also blissful. क्यों? He is aware of the eternal truth. उनको पूरे ब्रह्म ज्ञान है. उनको पूरा सत्य का ज्ञान है. He is in touch with the eternal truth. वो अपने सत्य को पहचान चुके हैं, अपने चित्त में हैं, full awareness consciousness के, divine consciousness के, and that leads to bliss. So सत्य and चित्त leads to bliss. So he is fully living a life of discipline or blissfulness. तो या तो आप चाइल्ड की तरह इनोसेंट हो तो आप ब्लिसफुल होंगे, या आप एक ब्रह्म ऋषि की तरह ब्रह्म ज्ञान में बिल्कुल लीन हो तो आप ब्लिसफुल होंगे. राइट? सो what is the quality there? Innocence can be blissful or wisdom can be blissful. That is the understanding that we should have. Making sense? Vijay ji, did I make it clear or you have some more points? Clear? Okay, good. Anybody else who has any doubts or anything you want to share? Yeah, me. But hold on, let me just go to Anirudh ji. Anirudh ji seldom speaks in the middle of the program, so let me give him a chance. Yeah. बस ये मेरा अपना ये अभी इस पे विचार कर रहा था, बाद में भी बोलेंगे थोड़ा सा. जो इग्नोरेंस को मैं समझता हूँ कि ये ब्लिस नहीं हो सकती. इट कैन नॉट बी ब्लिस. अगर ये प्रेजेंट में अगर ब्लिस अगर होती है, कोई इसको प्रेजेंट में ब्लिस मानता है, तो उसको फ्यूचर में जो है उसको इसको यही ब्लिस जो है जो उसकी जो ब्लिस की जो फीलिंग है वो डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स में आ जाएगी. Got your point, sir. Very right. अब मैं एग्जैक्ट वर्डिंग्स ये नहीं लूंगा, लेकिन आपके मतलब समझ गया मैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इग्नोरेंस में हैं, now let me give you an example, no? But what Anirudh ji has just now said is very very profound actually. आप अभी इग्नोरेंस में हैं, आपको बहुत ब्लिसफुल लग रहा है, तभी तक ब्लिसफुल में रहेंगे जब तक आपका रियलिटी से पाला नहीं पड़ता है. अगर आप प्लेन से कूद गए, प्लेन हाइट पे है, आप प्लेन से कूद गए, वाओ ग्रेट वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्या हवा लग रही है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है. देन यू सडनली रियलाइज यू डोंट हैव द पैराशूट. आप ब्लिसफुल होकर कूद तो गए हो इग्नोरेंस में एंड पैराशूट नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस? आपका रियलिटी चेकअप आएगा, ब्लिसफुल रहेंगे कब तक? until you hit the ground, and that is the end of the story. Next birth, right?
तो रियलिटी चेक होने तक आपको ब्लिसफुल रह सकते हैं. जैसे रियलिटी चेक होगा, यू विल फेस द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ व्हिच इज गोइंग टू रियली थ्रो यू आउट. Maybe you will lose your life, maybe it will be a great setback in your life, could be, no, every time it could be, won't be a loss of life, but it can be anything. Loss of a relationship, loss of a big financial fortune, correct? Major loss in business, कुछ भी हो सकता है. तो अगर आप ignorance में अपने कोई decision ले लेंगे and then you completely lose all control of life, and then these results can come: suffering, misery, depression, right? And if you can't tolerate it, or if you cannot accept it, then possibly even worse than that, suicide attempt or actual suicide. So all this can happen. So ignorance definitely is not blissful. That is my point. Now, having said that, there could be a few situations. In the video I had posted one of a story of a Osho video where a frog and a centipede were having a conversation, and everybody pitched in with the views. So everybody knows the story. I won't repeat the story. In case you haven't seen the video, you have to go and see the video in the group. Okay. But I'll tell you something here. When you are living in ignorance, okay, sometimes it can be beneficial for a short term, बहुत short term के लिए. और वो कैसे होता है बताता हूँ आपको, एक स्टोरी के फॉर्म में बताता हूँ. This will be very interesting. This is a story which actually I picked up from a session from Sandeep Maheshwari. I was a great fan of, I'm a great fan of his. So he in one of his sessions he told a story. तो एक बार दो दोस्त होते हैं, जय और वीरू मान लेते हैं. तो जय और वीरू दो बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है, राइट? वो गांव में पले बड़े हैं, तो गांव में खेलते रहते हैं. और एक दिन खेलते खेलते गांव से बाहर चले जाते हैं और थोड़ा सा अंदर जंगल की तरफ निकल जाते हैं. और जंगल में खेलते खेलते एक बहुत कुआं सा एक होता है, जो सूखा कुआं होता है, और उसमें जो 8 साल का बड़ा दोस्त होता है उसका पाँव फिसल जाता है और उसमें गिर जाता है. अब 8 साल का बच्चा अंदर गिर गया, गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, कोई है नहीं दूर दूर तक. अब ये जो 5 साल का जय है, ये देखता है मेरा दोस्त वीरू तो गिर गया अंदर, अब क्या करूं. तो ये इधर उधर देखता है, बहुत कुछ कोशिश करता है, कुछ नहीं मिलता उसे. तो वो थोड़ी सी इधर उधर भागता है और एक बाल्टी मिलती है उसे और एक रस्सी मिलती है उसे. तो वो रस्सी को बाल्टी से बांध के बाल्टी नीचे फेंक देता है, रस्सी पकड़ लेता है और दोस्त को बोलता पकड़ ले. तो उसने कहा पकड़ लिया. एंड देन वो उसको पूरे दम से पूरी जान लगा के उसको खींचता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो ऊपर तक आ जाता है और उसकी जान बच जाती है. So that is an incident which happens. Now they are very happy endings, right? So they jump out, have a lot of fun, उछलते कूदते जाते हैं और गांव में जाते हैं और सब लोगों को बताते हैं. क्या बताते हैं सब लोगों को? कि हम खेल रहे थे, ये कुएं में गिर गया और मैंने बाल्टी और रस्सी नीचे फेंकी और उसको खींच के ऊपर उठा लिया. 5 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैंने 8 साल के बच्चे को कुएं से खींच के बाहर निकाल दिया. सब हंसने लग जाते हैं, पागल हो गया, झूठ बोल रहा है. फिर दूसरे के पास जाते हैं, उसको भी यही बोलते हैं, सच है, बच्चे हैं जो हैं सच बोल रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करता, हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो तुम लोग. पर वो नहीं मानते, सब लोगों को बोलते हैं, सब लोगों को यही बताते हैं कहानी कि उसको चोट भी लगी है, मेरे हाथ में भी चोट लगी है. कैसे लगी है? इसे ऐसे ही लगी है. एंड दे आर रिपीटिंग दैट सेम ट्रूथ अगेन एंड अगेन. नोबडी बिलीव्स देम. कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं करता. फिर जो गांव में सबसे बड़े जो ज्ञानी हैं उनके पास जाते हैं, एजेड मैन, वाइस पर्सन, उससे बोलते हैं कि सारे गांव वाले जाके बोलते हैं कि ये देखो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं. कहते तो सही तो बोल रहा है, बच्चा सही तो बोल रहा है. उसने बाल्टी अंदर डाली और उसको रस्सी से पकड़ के खींच लिया और बाहर निकाल दिया. कहता कैसे कर सकता है ये? कहता कर सकता है ये, और वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उस समय वहां उसको ये बताने वाला कोई नहीं था दूर दूर तक कि तू ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसने कर लिया. कहता अगर वहां पे और कोई होता
तो उसको बता देता कि तू ये काम नहीं कर सकता, और वो कभी भी नहीं कर पाता। उसने पहली बार किया कोशिश, एंड ही हैड नो सोशल कंडीशनिंग। उसके दिमाग में कोई वायरस नहीं था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने कर लिया। सो व्हाट इज द लर्निंग हियर? इफ यू आर इग्नोरेंट ऑफ योर पोटेंशियल एक्चुअली, कि मैं इतना वीक नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, देन आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको बार बार बोला जाए ये तुम नहीं कर सकते, जैसे फ्रॉग ने सेंटीपीड से क्या बोला, तू 100 पाउंड लेके चल कैसे सकता है यार, इतना प्रॉब्लमेटिक है, हाउ डू यू डिसाइड विच लेग टू पुट फर्स्ट? एंड द सेंटीपीड कोलैप्स्ड आफ्टर दैट। उसके बाद वो सेंटीपीड चल नहीं पाया। क्यों? ही वॉज मेड अवेयर दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सोशल कंडीशनिंग ऑलवेज इज टेलिंग अस व्हाट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अगर इन चीजों को हम इग्नोर कर दें, यानी कि अगर हम इस इग्नोरेंस में रहें कि ये जो बोल रहे हैं बकवास है, या तो सुनाई नहीं देता उसे। एक और स्टोरी भी है, एक बहरा आदमी चढ़ रहा होता है, सब कहते हैं अभी नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, उसको सुनाई नहीं दे रहा होता, वो चढ़ जाता है और सारे काम करके आ जाता है, राइट? सो द रीजन व्हाई ही डिड दैट वाज बिकॉज ही कुड नॉट हियर देम. So you have to understand sometimes this kind of ignorance is good, but then you have to understand this is an exception to the rule. Rule is definitely ignorance is not bliss, wisdom is bliss. Wisdom leads you to bliss. Correct? So I hope I made things clear. तो सेंटीपीड वाली स्टोरी भी क्लियर हो गई. एंड डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी कोई वीकनेस है, आप उसको इग्नोर करते हैं, डोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल आर टेलिंग यू, यू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू कैन. आई विल गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल. सूर्य कुमार यादव, कितने लोग स्काई को जानते हैं? हाँ, क्रिकेट के हमारे स्काई हैं. ही हैज ए वेरी यूनिक शॉट. वो ठीक विकेट कीपर के पीछे से ऑफ साइड में और ऑन साइड में, यानी कि ठीक विकेट कीपर के जस्ट साइड से ही कैन हिट ए मैसिव सिक्स. प्रॉपर शॉट है. Nobody could even think of this shot maybe before he came into the picture. अब सब अगर बोले उसको कि ये कैसे शॉट मार रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको कन्विंस कर दे तो वो शॉट नहीं मारेगा और कहीं मारेगा और वो आउट हो जाए. वो उसकी स्ट्रेंथ है. तो शुड ही लिसन टू अदर्स कि ये शॉट पॉसिबल ही नहीं है, ये क्रिकेटिंग बुक्स में है ही नहीं वो शॉट. हाँ. He can hit it straight behind the wicket keeper with a great angle of the bat. And I have seen the video where Sachin Tendulkar was astonished by his shot. ये कैसे मारा, किसने मारा, कैसे इसने? So you have to understand there are some things that you are doing by your strength. ये आपकी strength है, आपकी unique quality है. You should ask for guidance only when you have a problem. If you're doing well, you don't need any kind of suggestions or any kind of guidance from anyone. So you have to understand, if there is a suffering and misery in your life, then you can relate it to some ignorance. Maybe in the materialistic world or maybe in the spiritual world. But there is also some kind of an ignorance which stops you from reaching the highest potential of your life. I was just having a discussion with Amit ji in the evening. Right? कुछ लोग हैं बहुत छोटी गेम खेल रहे हैं लाइफ में. They are not aware of their potential. अगर आप उनको ये अवेयरनेस दिला देते हैं कि भाई आप अपनी पोटेंशियल के मुताबिक बहुत छोटी गेम खेल रहे हैं, बड़ी गेम खेलिए, you are capable of it, then that removal of ignorance will help them to produce magical results in life. Yes or no? अगर वो सिर्फ 100 लोगों के लिए अभी लाइफ जी रहे हैं तो शायद वो अपने हायर पोटेंशियल तक अचीव कर पाए, 1000 लोगों को ट्रांसफॉर्म कर लें, 10,000 लोगों को ट्रांसफॉर्म कर लें, 1 लाख 1 मिलियन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर लें. वो पावर है, सबके अंदर है. But we are ignorant of our powers. So that kind of guidance can help them to remove the ignorance and again reach them to the highest potential. Yes or no? Connecting with me?
ये भी बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आप लाइफ के किस सिचुएशन में हैं, और अगर आप छोटी गेम खेल रहे हैं तो आपके इग्नोरेंस का लेवल क्या है, उसको हटा दीजिए। यू विल स्टार्ट प्लेइंग बिगर गेम्स इन लाइफ। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ऑब्वियसली देयर इज सम इग्नोरेंस। आप या तो स्पिरिचुअल लॉस को समझ नहीं पा रहे हैं या उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, विजडम नहीं है। और जैसे ही वो विजडम आ जाएगी, you will blossom in your life. आपका consciousness level will evolve and you will create magical results in your life. Yes or no? Yeah. Okay. So let's have some people share what is opening up. ज्ञान मैंने थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, तो let's just have some sharings. क्या खुल के आ रहा है? So one thing we have seen is ignorance is definitely not bliss. And what can help you to achieve magical results in life or maybe bliss in life is the wisdom. Wisdom of the ultimate truth. Wisdom of the God. Wisdom of the spiritual laws. Wisdom of how to apply the things you know in your life to create wonderful results. That experience will give you that wisdom, and that wisdom will transform your life. That is the learning for today's session. Let's have some people share. What is opening up? Yes, Parth, you wanted to share something. Where are you? If it is okay, you can share. Yeah, just the example just skipped my mind. क्या क्वेश्चन था मैं भूल गया. Yeah, go ahead, Parth. You want to share something? No. They said we forgot. He forgot. Okay. So whenever you remember, sorry, I had to, that time I gave the chance to Anirudhji. So when you remember, please raise your hands and you can do that. Okay. Anybody else who would like to share? What is opening up? Anything that extra else that you want to share? Please go ahead. Amitji, Gunjan. Yes, Anirudhji, go ahead. सर मैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था, इग्नोरेंस और ये ब्लिस का थोड़ा सा। तो मैं ये 2 मिनट लूंगा। यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हर एक के 2 लेवल होते हैं। एक तो जो प्रेजेंट लेवल है, जिस कॉन्शियस लेवल कह लो, जो उसका अपना प्रेजेंट लेवल है, और दूसरा है जो फ्यूचर में वो डिजायर लेवल उसका क्या है, वो क्या बनना चाहता है, क्या कौन सा लेवल लेना चाहता है, बेस ऑन गाइडेंस नॉलेज जो अभी बता रहे थे उसके बेस पर। तो वो 2 लेवल में रहता है। तो अगर वो अपना फ्यूचर की डिजायर की लेवल के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है पाने के लिए, तो उसको उसमें ब्लिस आ सकती है, और वो ब्लिस की तरफ एक रास्ता पाथ की तरफ बढ़ेगा वो, अगर वो अपनी फ्यूचर डिजायर लेवल को गेन करता है बाय नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये तो ये हो गया। अगर कोई है जो प्रेजेंट में ही रहना चाहता है, फ्यूचर डिजायर की तरफ जाना ही नहीं चाहता, तो वो प्रेजेंट में क्या है, वो उसको ब्लिस नहीं आएगी। अगर वो आ भी गई सपोज, तो जो मैं बता रहा था कि फ्यूचर में फिर वो डिप्रेशन और प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगी अगर जो प्रेजेंट में है। तो इसलिए मेरा ये कहना है इसके बेस पर कि हर एक के लिए जरूरी है कि वो अपनी जो फ्यूचर डिजायर लेवल है उसको पाने की कोशिश करे। तब उसको ब्लिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब वो आएंगे तो फ्यूचर में फिर वो एक अलग लेवल और अपना लेवल उसका बढ़ता रहेगा, तो ब्लिस की तरफ चलता रहेगा टू द फाइनल एम, फाइनल डिवाइन अचीवमेंट। Okay. तो ये मेरा इसमें ये कहना है। Got it. Let's acknowledge Anirudhji for that. Okay. Yes. All right. Anybody else who has any point? जो कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर और कोई हैं जो शेयर करना चाह रहे हैं। अमित जी, गुंजन जी, जो नए लोग आए हैं। हेलो शशि जी, मैं तरुणा बोल रही हूँ। हाँ जी तरुणा जी बोलिए। नमस्कार जी। तो हाँ जी। मुझे जो आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं कि ब्लिस
इग्नोरेंस ब्लिस हो ही नहीं सकता। और जो पैराशूट का एग्जाम्पल आपने दिया कि कूद गए बस और उस समय लगा कि हाँ है, बट मुझे लगता है कि वो भी ब्लिस नहीं है, उसको भी ब्लिस की कैटेगरी में रखना मतलब शायद ब्लिस का अपमान करना ही होगा। वो तो इग्नोरेंस है, वो तो टोटल इग्नोरेंस है। हाँ, तो इग्नोरेंस किसी भी स्तर पे हो नहीं सकता ब्लिस। Absolutely right. Only wisdom can give you that bliss. And we will also learn from what we are taught in the scriptures. Let's have something from there also before we close the session. But first, let me take some more sharings and then I will tell you that. एक सेकंड, गुंजन जी, गो हेड। हाँ जी। सर एक्चुअल तो जैसे आप बहुत बार एग्जांपल ये दे चुके हो कि हम ब्रह्मास्मि, बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू जंप इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, सो दैट इज विजडम. So that is the example, that is your pet dialogue. So wisdom is like aham brahmasmi is okay, but wisdom is not jumping in front of the train. Absolutely. You should know what is life threatening for you and what is beneficial for you. What is harmful and beneficial, ये मालूम होना चाहिए ना, ये reality है. If you're in ignorance, then your reality check will end your life. So you should be very, very wise in your approach to life. And that experience will give you wisdom. No learning is going to give you wisdom. Wisdom comes from experience. As I had put in that second Osho video which I had put, experience will give you the wisdom. Life is a mystery. You have to live it and then solve it. Living means what? Experience. Experience will give you wisdom. You can't learn to be wise. You can't learn to be handsome. You can't learn to be beautiful. You are beautiful. You are handsome. You are wise. Simple. और ये आपका नेचर है, तो ये कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है. अगर आप बोलो ब्लिस, मैं ये सब कर लूंगा उसके बाद मैं ब्लिसफुल हो जाऊंगा, कभी नहीं होंगे. आप ब्लिसफुल अभी हो, ये आपका नेचर है. आर यू इन टच विथ योरसेल्फ? आर यू अवेयर ऑफ योर रियल नेचर? If you are aware of the real nature, you are free. You are completely free right now. The bliss is always right now. It is your nature. Get in touch with that nature and then do whatever you want to do. But outside world में bliss नहीं है. Inside world में ही bliss है. And you are bliss. You are the truth. You are wisdom. Now you can say Aham Brahmasmi. Get your point? So Aham Brahmasmi means I am wise. I am wisdom. I am truth. ये मेरा नेचर है. So you don't have to go and prove that you are blissful. You are blissful. Now enjoy life. कभी खुशी कभी गम, yes, आने दो, मैं blissful हूँ. कभी दुख कभी सुख, आने दो, मैं blissful हूँ. So you are an observer. But the moment you become an observer, a sakshi, then you are blissful. That is your nature. Making sense? Right. And that will come with the wisdom of who you are. Wisdom leads to bliss. वैसे भी आप देखो, हमारे पंचकोश जानते हैं सब लोग. पंचकोश विवेक क्या है? We are a bundle of 5 bodies, right? Annamaya kosh, physical body. Pranamaya kosh, energy body. Manomaya kosh, mind body. Vijnanamaya kosh, this is the intellect body where the wisdom comes. Divine wisdom is downloaded here. And what is the next one? Anandamaya kosh, bliss. Wisdom and bliss are connected. Unless you have wisdom, you will never become blissful. That is the connection. And this it is given very simply in our scriptures. Vijnanamaya kosh में wisdom है, Anandamaya kosh में bliss है. So they are related, they are connected, and wisdom leads to bliss. Making sense? Any questions? Anything you want to share? Please go ahead. Otherwise, we still have 7 minutes, 6 minutes. Yes, Amitji, go ahead. We discussed somewhere in between about half an hour back that if blissful stage is arrived, then there is no going back and the person remains always in the state of bliss. I don't know, maybe then probably I have not experienced this. So what I experience
is that sometimes I know what is bliss, which is purely internal, irrespective of any external vastu, vyakti or paristhiti. But it does happen that maybe largely if I look at my life in the last 1 year or maybe this year, or maybe if I look at a day, I think about 20-30% time, I know that I'm at a complete internalized blissful stage. But at the same time, about let's say 70-80% times, the other things matter and I am not in bliss. So this experience is absolutely different than what we discussed about half an hour back. So what is the correct? See, the correct approach you have to understand is bliss is your nature. Most of the time correct, you are not in touch with your nature. That's the problem. Correct? So it means it is possible to have. Go ahead. So it is possible to have tasted and experienced bliss, but still not been able to maintain it 24/7, isn't it? That is when you are a sadhak. What is Turiya state? Tell me, what is Turiya state? In meditation, most of the serious sadhak would have tasted Turiya state for a couple of seconds, a couple of minutes. That is blissful. That is blissful. Turiya state is blissful. No other state is blissful. क्योंकि आपका नेचर वहां है. आपका रियल नेचर इज तुरिया. Waking state, dream state, deep sleep state is not your real nature. You are an observer who is going through these three states. Yes or no? So at the state of Turiya, you will reach that blissful nature. And once you are in touch with that blissful nature, you will never lose it, in the sense you can always regain it. That's what I meant. Yeah, correct. Once you have touched the Turiya state, you can always go back and reach that state again. Hit that state again and again and again and again and again. And once you are stationed there, then you are in Samadhi, boss. Yeah. So we have not reached that state. So you can experience blissfulness in your meditation, possibly. Meditative state में आप blissfulness experience कर सकते हो. But that comes with the wisdom of the divine. When the God is made real for you. When you achieve God realization, means what? You are making God real in your life. That is when that Turiya state will come, and that is when the blissful nature will come. Okay. So I'm going deep into spirituality here, and I'm sorry if I have gone there. If people can't follow me, it's perfectly fine. But all I'm trying to say is that wisdom will lead to bliss. To get to the wisdom, spiritual wisdom is the only way to move on the spiritual journey. Yes? Amiji, did I make sense? Yeah, so I wanted to have the clarification that it is very tough to be 24/7 in bliss. But at the same time, whenever there is complete out of bliss situation, very focused approach can lead to, once again, establishment of bliss within seconds. Yes. Possible. Initially, it will be there only in the meditative state. You have to get that also. In the waking state, it cannot be reached. It is there in the background, but you will never reach that in the waking state. You will reach that only in the fourth state. We call that the Turiya state. That's our basic nature. Yes? I think when we taste the Turiya stage, probably correct me if I'm wrong, it's like that you taste this, like that's you taste this, and then taste works for you for few hours, days, weeks, like a constant source. No, when you touch there, you get a lot of power from there. You get a lot of energy from there. Yeah, that's what I meant. So you can heal yourself, you can heal yourself, you can heal others, and that will possibly increase your, you can say, capacity to be there in that state for some more time. Ultimately, it is that state which gives you the feeling of blissfulness. Nothing else will. Yeah. Otherwise, we are living in wrong notions. We are living in assumptions. Again, we are living in ignorance that we are blissful. We are not blissful. We are ignorant. Simple. And we are sadhaks. So keep practicing. That is a message. All right, let's acknowledge Amiji for that. Very good. Yes, Anirudhji, you have been raising your hands. Please go ahead. I have a question. Hold on, Vivek ji, 1 minute. Anirudh ji के बाद आता हूँ. मैं 1 मिनट लेगा सर. मेरे ये जो इग्नोरेंस का जो हम
देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वी आर ऑल आर इग्नोरेंट। मैं पूरी बात कर लेता हूँ। वी आर ऑल आर इग्नोरेंट एंड वी आर ट्राइंग। जब हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचने की कोशिश करेंगे फ्यूचर डिजायर लेवल पर, वो हमारा एक काम, हमारे अपने आप को अवेकन करने का तरीका है नॉलेज का। फिर वहां करेंगे वो इग्नोरेंट हो जाएगा, फिर उसको अवेकन। जब तक कि फाइनल एम पर नहीं पहुंचेंगे तो हम तो हर एक आदमी इग्नोरेंट ही रहेगा टिल ही रीच द डिवाइन लास्ट स्टेज। So I will not say that. What I will say is, when you are sleeping, you are ignorant. When you are awakened, जब आप जाग जाते हो, तब आप साधक बनते हो, तब आप awakened हो, enlightened नहीं हो। आप जो बोल रहे हो हायर स्टेट लेवल, वो enlightenment का स्टेट है, वो जर्नी है। So there are 3 states you need to understand. एक सुप्त अवस्था है जहां आप सो रहे हैं, यानी कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ignorant है। उसके बाद आप जाग जाते हो, अब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलना शुरू हो रहा है, एनलाइटन नहीं हुए, साधक हो, आगे चल रहे हो, जर्नी शुरू हो गई है। पहले तो जर्नी थी नहीं ना, अब जर्नी शुरू हो गई है। हम साधक की जर्नी शुरू हो चुकी है, मीन्स यू आर अवेकेंड। नाउ यू आर मूविंग कॉन्शियसली ऑन द जर्नी ऑफ इवोल्यूशन, बट एनलाइटनमेंट इज द फाइनल स्टेज दैट यू आर गोइंग टू रीच। वो ब्लिसफुल स्टेट है आपका, राइट? तो थोड़ा सा टर्म्स चेंज किया, आइडिया आपका सही है, बिल्कुल सही है। मेरा ये कहना है हम सब इग्नोरेंट हैं। सब इग्नोरेंट है नहीं बोल सकते सर। इग्नोरेंस से हम क्या कर रहे हैं बोलिए? प्रेयर क्या है हमारी? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अपनी जो नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। सर ठीक एक है, मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, आप समझिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी प्रार्थना क्या बोलती है? हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असतो मां सद्गमय। करेक्ट? तो असत्य ये नहीं है कि हम सब असत्य में हैं जब तक सत्य में नहीं पहुंचेंगे, नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। हम इल्यूजन में हैं, हमको इल्यूजन से ट्रुथ की तरफ जाना है, हम वो जर्नी पे हैं। पर जो सो रहा है वो इग्नोरेंट है, जो जाग गया है वो इग्नोरेंट नहीं है, वो जागना शुरू हो चुका है, वो चलना शुरू कर चुका है, वो रास्ते में, वो साधक है। वहां पहुंच जाएंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, ये समझिए। फिर क्या हम क्या बोल रहे हैं? हमको डार्कनेस से, डार्कनेस ऑफ व्हाट? डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कहाँ जाना है? टू द लाइट ऑफ द विजडम। तो इग्नोरेंस से विजडम की तरफ जा रहे हैं, हम रास्ते पे हैं, सारे रास्ते पे हैं, सारे अवेकन हैं, पर कोई एनलाइटन अभी नहीं है। समझ रहे हैं? इस तरीके से समझ सकते हैं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, टर्म्स थोड़े से चेंज करने हैं, राइट? तो ये हमारी प्रेयर है, अगर आप ध्यान से सुनो, यही हम बोलना चाह रहे हैं ना भगवान जी से भी। तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज व्हाट इज अवर जर्नी। मेकिंग सेंस? So coming back to the discussion, it is ignorance is not bliss, wisdom is bliss. Wisdom will lead you to bliss. Correct? All right, let's acknowledge Anuj for that. Thank you. Yes, Parth, you had raised your hand. Go ahead. Yes. So दिमाग में काफी सारी चीजें आ रही थी मेरे। तो इसमें से एक चीज है, जैसे आपने तुरिया स्टेट बोला, तो उससे मेरे दिमाग में एक चीज आया जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। क्या राइट? कहते हैं? फ्लो स्टेट कहते हैं जिसको। ओके, फ्लो स्टेट मतलब जैसे समझ गया, बोलते जाओ। कोई भी राइट, हाँ। तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, वेकिंग स्टेट ही है एक तरीके की, बट आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आप बिल्कुल खो चुके हो उस चीज पे। ठीक है? तो उस केस में आपका फोकस पूरी तरह से उस काम पे रहता है। ठीक है? ज्यादातर जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन है, जब वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर फील्ड पे है, वो फ्लो स्टेट में है। ठीक है? आप उस समय पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, अवेयर भी होते हो। ठीक है? इवन साइंटिफिकली भी स्पीकिंग, आपके ब्रेन के जो वेव्स हैं वो भी बहुत हाई लेवल पे होते हैं उस समय। तो आपका ब्रेन बहुत सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होता है परफेक्टली, बट आपके अवेयरनेस में ना आपके अंदर अटैचमेंट होता है रिजल्ट से, प्रेजेंट से कंप्लीटली आप अवेयर होते हो। ठीक है? तो जैसे अगर मैं तुरिया स्टेट के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, एंड ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा जो आपने अभी experience किया बताया कुछ ये ध्यान का स्टेट है। जो आपने अभी बताया ये क्या है? तुरिया स्टेट नहीं है, ये ध्यान का स्टेट है। ध्यान, यू आर वन विद द ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्रिकेट हो या डांस हो या कोई क्रिएटिव आर्ट हो, यू आर वन विद दैट। सो आप पूरी तरह से
मगन हैं उसमें, खो चुके हैं उसमें, आपका ध्यान लग गया है उसमें, ये बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेज पीछे है। तुरिया स्टेट इज यू कांट टेक एनी एक्शन, you are beyond your body, beyond your mind. That is a samadhi state. Okay, so what you're saying is right, but it is not turiya state, it is dhyan, very very close to that. Yeah, नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, दोनों स्टेट डिस्टिंक्ट है, डेफिनेटली डिस्टिंक्ट है, ठीक है, बट आई थिंक फ्लो स्टेट भी ब्लिसफुल आप कह सकते हो. got it. Be in that flow. If you're doing something, you will be in that flow, which is the closest you can get into that state. So be in that. That's perfectly fine. Yes. Okay, let's acknowledge Parth. Yes, Vivek ji, you want to share something? Go ahead. Yeah, I wanted to ask कि materialistic situation में, like in our daily life, was 70% time we are dealing in material situations. तो materialistic situations में ignorance मतलब is not a bliss कैसे? Tell me how it is bliss. If you think ignorance is bliss, tell me how it is. नहीं, ignorance जैसे suppose materialistic situation में कैसे deal करें इस situation को? Blissful रहने को किसी चीज की नॉलेज है, आप क्या कर रहे हैं किसी बिजनेस में? हाँ, जैसे अगर मान लीजिए we are into some work, पेमेंट आना है, नहीं आया, हमने छोड़ दिया। आप काम क्या है पहले बताइए, आपका कोई काम है, चाहे जॉब में हो या सर्विस में हो या फिर बिजनेस में, है ना? आपको उसकी नॉलेज है? जी बिल्कुल है। आप उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं? जी। उससे आपको फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। अगर तो कभी नहीं हो है, तो ये विजडम है। प्रैक्टिकल demonstration application of knowledge to give you the desired results is wisdom. You are using your wisdom, your business acumen to make profits for yourself. आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये आपका विजडम है ना। बिजनेस एक्यूमेंट, बिजनेस चलाना, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भी तो विजडम चाहिए ना। एक सीईओ, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? अपनी विजडम से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक कोच, क्रिकेट कोच अपनी विजडम से कैप्टन के साथ मीटिंग करता है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस से और उसको अप्लाई करते हैं मैच में और मैच जीत जाते हैं, तो ये विजडम है ना। उनकी विजडम की वजह से वो जीते, ये विजडम है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। और कई बार जब अटक जाते हैं तो हाउ डू वी अप्लाई दिस? So you have to understand where wisdom is not coming. कहाँ विजडम नहीं आ रहा है, वो भी तो आएगा ना। और हर बार सक्सेसफुल होंगे जरूरी नहीं है, विजडम आप फेलियर से भी सीखते हैं। If you lose a match, you still learn from it and gain some wisdom so that you can next time you can apply that. Wisdom is irrespective of the result. Yes. Success or failure doesn't mark the quality of a wisdom. धोनी was a vice captain. धोनी अच्छा कैप्टन था, वाइस कैप्टन था, बिल्कुल। वाइस मतलब WIAC, विजडम वाला कैप्टन था। यस, मैच हारा वो, कहीं हारा। 2 वर्ल्ड कप जीते, जीता। So he is a successful captain? Yes, he is. So he used his wisdom to gain success in cricket. Yes or no? Yes, but for that moment it was not blissful कि it is not moment by moment. Events moment by moment होते हैं, सक्सेस या फेलियर आ सकती है, आप दोनों में से विजडम निकाल सकते हो। सचिन तेंदुलकर इज कंसिडर्ड टू बी गॉड ऑफ क्रिकेट। कितनी बार 0 पे आउट हुआ है? बहुत बार हुआ है। तो क्या हो गया? उस समय विजडम चली गई क्या? नहीं, विजडम नहीं गई, फेलियर हुआ है, कोई बात नहीं। he failed, but then he is a champion, he is a god of cricket. You have to see overall picture. Wisdom doesn't mean you will always be successful, and ignorance doesn't mean you will always be failure, but you have to understand what works for you in your life, right? Okay. Yeah, good. Let's acknowledge Vivek ji. Yes, Gunjan ji, you have raised your hand, please go ahead. सर मैं जो बोलना चाहती थी आपने बोल दिया कि हम बार बार नीचे गिरते हैं, वो मकड़ी ऊपर चलती है, फिर वो गिरती है, देन वे अगेन क्लाइंब अप, देन अगेन वो नीचे गिरती है, देन अगेन इट क्लाइंब अप. So we have to experience everything in life so that we can reach that state of wisdom.
if you are always successful in life, if you never failed, possibly you will never get the wisdom. Yes. आपको कई बार हारना भी पड़ेगा, तभी असली wisdom मिलेगी. Otherwise इतने ओवर जैसे कॉन्फिडेंट हो जाओगे अमित ने आपके भी पास. हाँ जी, जैसे अमित ने भी कहा कि तुरिया थोड़ी देर के लिए फील होता है, then again he is involved in Yes. his daily work. So even it happens with me also, you know that. It will happen with कि all the sadhaks. Spiritual Yes. journey is the journey of a spider. ऊपर जाओगे फिर नीचे गिरोगे. Yeah. So you have to keep practicing. That is why a sadhak has to keep practicing with discipline, lot of discipline. It's Yes, only when you reach some level of perfection, which you achieve when you are in the stage of sthit pragya, third eye consciousness. That is when you will be stable. आज्ञा चक्र पे अगर आपका consciousness आता है, which is called as सहज samadhi. Then from there you move on to the final state of samadhi, which is crown chakra consciousness. So it is a long journey. It will take lifetimes. Don't be impatient. Be on your journey, be with your spiritual journey and keep walking. You are awakened. When will you get enlightened? Lifetimes. So keep walking. Right? All At right. least we are walking. Yes, that is important. Keep walking. You have spent many lifetimes sleeping. Now you have started walking after waking up. जाग गए हो तो अब चलते रहो. यही जर्नी है. इसी के लिए आए हो. Right? Okay, so with this we come to the end of the session. We are already 11 minutes over time, so I will not stretch the session further. Anybody who has any question? Gunjanji, you still want to share something? No, sorry, lower your hand. Yeah. Okay, so with this we come to the end of the session. Thank you very much for your participation, and I hope this session was valuable to everybody, especially the guests who have come for the first time. I acknowledge you once again. Thank you very much for being here. And you can leave your number in the chat box. We will get back to you and we will send you the recording. इसकी recording हम आपको भेज देंगे. आप अपना number और नाम chat box में लिख दीजिए. We will get back to you. Yes. So with this, thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great life. And we meet again next Wednesday with a new topic, with a new agenda. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Aham Bye-bye. Brahmasmi. Good night. Good night.